My dear student, in this question, it is mentioned let R, A, B, C, D be a relational schema with the following FDs. A determine B, B determine C, C determine D, and D determine B. The decomposition of R into AB, BC, and BD. Option A give a lossless join and dependency preserving. B gives a lossless join but dependency not preserving. C doesn't give a lossless join but dependency preserving. D doesn't give a lossless join and dependency is not preserving. So what we do, first of all, we will write all the FDs here. You can see what is the data given, my dear student. R, A, B, C, D. R, A, B, C, D, and FD set is given. A determine B, B determine C, and C determine D, and D determine B, my dear. A determine B, B determine C, C determine D, and D determine B, my dear student. And we will copy this because it is used in the next slides also. So here now, first of all, we have to check lossy or lossless join. And what is the decomposition is given? Decomposition is given R1 AB, R1 AB, AB, BC, and BD. And BD. So what we can say, it is what? R1, A and B, R2 and C, R3, B and D, my dear. Okay. So what is the condition for a lossless join? First of all, whenever you take the union, you will get exact relational schema and common attribute, either a super key of R1 or a super key of R2. Okay. So here you can see, first you will take the union. First condition, you will take the union R1 AB, R2 BC, and R3 BD. What you are getting, my dear student? You are getting A, B, C, D. You are getting exact R? Yes. Now, second, R1 AB intersection R2 BC. What is the common attribute? B. What is the common attribute? B. When you take the closure of B, what we are getting? B, C, blah blah blah. Why I'm saying B blah blah blah? Yes, you are getting D also. I'm not denying. I can even मैं लिख भी सकता हूँ. But here you can see BC means what? Super key of R2, my dear. Super key of R2. तो आपको पता है जब भी कोई डिकम्पोजिशन के जो भी कॉमन एट्रीब्यूट आप उसका क्लोजर लोगे, किसी एक की भी सुपर की आ जाती है, तो आप क्या बोलोगे? यू कैन ज्वाइन, इट इज ए लॉसलेस. So what we can say, R12, that is what? A, B and C. And what is the R3, my dear? What is the R3? R3 क्या है इधर? R3 is B and D, my dear. B and D. Now what is the common attribute here? B. When you take the closure of B, what we are getting? We are getting B, B say C, C say D, any other? No, you are getting BD. Into say, you are getting super key of R3. So we can join R1, 2, 3, A, B, C, D, and you can say it is a lossless join, my lossless join decomposition. Lossless join decomposition. How you are doing? First of all, R1 AB, R2 BC, R3 PD. Join first of all this one, R12 ABC, R3 is what? BD. When you join, then what happen? Yes, you are able to join 1, 2, 3 A, B, C, D, and you are getting lossless join decomposition. Lossless join decomposition, my dear. Lossless join decomposition. Now, first part has been done. You are getting lossless join. Now we have to check for second part. We have to check for second part.
Here you can see it is split R1 in AB, R1 in AB, can see, and R2 in BC, and R3 in BD. R3 in, and how we check, my dear? You know the concept. Can write here R1 AB, R2 BC, R3 BD. R3, then whatever FD satisfied by this can write in this domain. कहने का मतलब क्या है, जैसे क्या कौन कौन सी एफडी सेटिस्फाई हो रही, हाउ यू चेक, देयर आर टू प्रोसीजर, आई विल टेल बोथ प्रोसीजर, मैं आपको दोनों प्रोसीजर से सिखाऊंगा। सबसे पहले आप ए का क्लोजर निकाल लीजिए। व्हाट इज द ए क्लोजर? ए बी सी डी, ओके। व्हाट इज द बी क्लोजर? बी सी डी। व्हाट इज द सी क्लोजर? सी डी बी। व्हाट इज द डी क्लोजर? ओनली डी, माय डियर, not only D, D, D closure CDB, D closure DB and C as well. Now, जो FD जिस सब रिलेशन में सेटिस्फाई हो रही है, यू कैन राइट नॉन ट्रिवियल FDs. तो हियर A डिटरमाइन B, यस। क्या B से A हो रहा है? नो सर, B के क्लोजर में A नहीं आ रहा है। इधर B डिटरमाइन C, यस, B डिटरमाइन C and C डिटरमाइन B also. Here B determine D, D determine B also, and B determine D also. Now you know what is the meaning of dependency preserving. When you will take the union of all sub FDs in a sub relations, you are getting a original FD set F, then you can say dependency preserving. Dependency preserving, my dear. If this is happening, then you can say dependency preserving. Okay, my dear student. Now when you combine, you can see you are getting A determine B, B determine C, and D determine B, D determine B, and my dear student, you can see here C determine B and B determine D, that you can say C determine D. Transitively you can say C determine D. When you take the union C say B, B say D, so you can conclude C determine D, using the property of FD, transitivity, C determine D. So what is happening, my dear? Dependency preserving. Dependency preserving. Clear, everyone? Clear? So yes, dependency preserving. I am telling one alternate approach, or how you can write R1 is what? AB. R1 is what? AB. R2 is what? BC. And R3 is what? B. R3 is what? मैं आपको दूसरी अप्रोच से भी इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। हालांकि जो फर्स्ट अप्रोच है ये आपका इसका बेसिक ओरिजिनल मेथड है, बट आप एक और अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैं थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या चेक? इजी भी है। कैसे? आई विल शो यू। इसमें क्या करना है, जो एफडी डायरेक्टली प्रिजर्व हो रही है वो आप सीधे लिख दीजिए। लाइक ए से बी R1 में प्रिजर्व है, यस सर। बी से सी R2 में प्रिजर्व है, यस सर। डी से बी R3 में प्रिजर्व है। नाउ वी हैव टू चेक फॉर सी से डी। सी डिटरमाइन डी, माय डियर। का एक और टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं, सी डिटरमाइन डी। नाउ फोकस,
Where is the C present? And where is the D present? In R3. And which one is common? Either you are getting C से B and C से B and my dear student B से D. Then you can say ना, like आपने वाया होते हुए सीखा है ना, either you have a direct या you have via connecting this point to this point, this point to this point, then this point to this. Either you have direct path or connecting via. अपन उसको बोलते हैं वाया होते हुए. जैसे भी आप ट्रैवलिंग करते हो, अपने होम टाउन जाते हो, either you have direct one path, one conveyance, है ना, ट्रांसपोर्ट मीडियम, या you have a connective. That is called via. Like X point to Y point, then Y to home. Yeah, either directly X to home. So here, what we have to check, if there is a path. Which path? If I am able to determine C to B and P to D, then I can say it is indirectly present. सर ऐसे ही क्यों चेक किया C से B एंड B से D? प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहां थोड़ा आपको अलर्ट रहना है. C प्रेजेंट है R2 एंड R3 में, सॉरी C प्रेजेंट है R2 में एंड D प्रेजेंट है R3 में. व्हाट इज माय FD? C से D. C है R2 में, C है R3 में. कोई कनेक्टिंग एट्रीब्यूट है, कोई कड़ी है जिसको अपन चेक कर सकते हैं? B है सर, B कॉमन है. तो C से B हो जाए और B से D हो जाए, तो अपन कह सकते हैं कि C से D इनडायरेक्टली हो रहा है प्रिजर्व. कोई चीज अपन ने पिछले मेथड में अपन ने कॉन्सेप्ट से सीखी है कि C से B एंड C से B एंड B से D. तो क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे? टेक द क्लोजर ऑफ C माय डियर. क्या आपको B मिल रहा है? क्या C का क्लोजर लो, C से B आ रहा है. यस सर आ रहा है. यस इट इज. देन टेक द क्लोजर ऑफ B. टेक द क्लोजर ऑफ B. व्हाट वी आर गेटिंग? B C D. आपको D आ रहा है सर. तो व्हाट वी कैन से, C tends to D indirectly preserve C to B in R2 and P to D in R3. So what we can say? Dependency preserve. We can conclude here, dependency preserve, my dear, dependency preserve. So my dear student, here what we can say, give a lossless join and dependency preserve. So A is the correct answer for this question. A is the correct answer for this question, gives a lossless join and dependency preserving. Here we are getting lossless and dependency also preserved. So A is the correct answer, my dear student. Hope so you get it. Thank you everyone.